ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ. बस कर बहन, अब कितना देखेगी. ಯಾವುದೋ ಇದು ವ್ಲಾಗರ್ ಅದಲ್ಲ, ತಗೋ ಸಾಕಾ. ಹಾ ವ್ಲಾಗ್ ಬೈ, ವಿಲಾಗ್ ವಿಲಾಗ್. ಇವರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕತ್ಲತ್ತಾರ ಜರ. आज 5 महीने हो चुके हैं मुझे यूरोप को आकर, लेकिन मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि स्लोवाकिया देश की इंडियन एम्बेसी को विजिट कर पाऊँ. हेलो दोस्तों, मैं दिनेश जादव, अपने गांव का मोस्ट फेमस यूट्यूब व्लॉगर, स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग के अंदर. आज है 15 अगस्त. मैं हूं अभी यूरोप कॉन्टिनेंट के स्लोवाकिया देश के अंदर. तो अभी जा रहा हूं मैं स्लोवाकिया देश की कैपिटल ब्रैतिस्लावा को, जहां पर इंडियन एम्बेसी है, और वहां पर जाकर हम 15 अगस्त मनाएंगे. तो आइए चलते हैं, देखते हैं इंडियन एम्बेसी में 15 अगस्त कैसे मनाया जाता है. तो माफ़ करना, मैं एक बाथरूम के अंदर हूँ, तो ट्रेन के वॉशरूम के अंदर मेरी साउंड इको हो रही होगी. मैं इंडियन एम्बेसी का नाम जो है टीवियों में, जो फिल्म में होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सुनता था, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ चुका हूँ, इंडियन एम्बेसी को जा रहा हूँ, तो एक तरह की खुशी महसूस हो रही है मुझे. आईना देखो भाई कितना साफ है. थोड़ा सा वॉशरूम में चलते हैं. फाइनली आज वो दिन आ ही गया और हम चल पड़े इंडियन एम्बेसी की तरफ. जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो आज है 15 अगस्त. इसी के चलते हमको ये मौका मिला है कि हम इंडियन एम्बेसी को जाए और 15 अगस्त सेलिब्रेट कर पाए. जब मैं स्कूल में था, 15 अगस्त के ठीक 1-2 दिन पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि ड्राइंग, क्विज कंपटीशन हुआ करती थी. ऐसे ही सिमिलर एक्टिविटीज इंडियन एम्बेसी ने भी आयोजित किए थे. करीब 10 से 11 हजार तक इंडियंस है स्लोवाकिया देश के अंदर. उतने सारे लोगों में भी करीब 300 से 400 लोग ही 15 अगस्त को आ पाए, और कुछ 40 से 50 लोग ही इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए होंगे. एक भाई साहब तो फर्स्ट आए थे शायद ड्राइंग के अंदर, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाए. मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया. स्कूल के दिनों में भी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा करता था मैं. अब ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए था. कोई नहीं, आगे 26 जनवरी आने वाला है, उसके अंदर ट्राई करके देखते हैं. ये जगह पहले आपने 1-2 बार मेरे वीडियोस के अंदर देखी होगी. ये है ब्रैतिस्लावा के रेलवे स्टेशन के बाहर के नज़ारे. फ्लैग होस्टिंग थी करीब 9 बजे. 8:51 हो चुके थे और मेरे दोस्त अभी कैब बुक कर रहे थे. रेलवे स्टेशन से कार से इंडियन एम्बेसी को जाने के लिए लगते हैं 15 मिनट. तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं मेरे दोस्त को कनाडा में कहता हूँ कि चल भाई ट्रैम से चल लेते हैं. मगर उसको तो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ घूम चुका है पहले. वो कहने लगा कि इंडियन एम्बेसी को ट्रैम तो जाएगी, लेकिन वहाँ से और 10 मिनट पैदल चलना होगा हमको इंडियन एम्बेसी पहुँचने के लिए. ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗ್ತಾವ ನೋಡಮ್. ಒಂದೇ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ. ಬೋಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬಾಗ್ಲದ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಹತ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 51 ಆಯ್ತು. ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ಈಗ 9 ಅಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಊರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸಮೋಸ. वीडियो बनाते बनाते मुझे यहाँ पर एक
ठोकर लग जाती है, तभी भैया कहते हैं संभाल के भाई। कैब आ चुका था, हमारा कैब था 7 सीटर। कैब के चार्जेस गिरे हमको करीब 6 यूरो रेलवे स्टेशन से इंडियन एम्बेसी तक। ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲಾಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಒಂದು ಕಾರ್ದಾಗ 7 ಮಂದಿ ಹೊಂಟಿವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸೋಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅವನೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಬೇಕಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು 7 ಜನ ಒಂದು ಕಾರ್ ಊರಾಗ. सो दैट वाज द ब्रैतिस्लावा सिटी। फाइनली हम ब्रैतिस्लावा के इंडियन एम्बेसी को पहुंच गए और ये रहा अपना प्यारा सा तिरंगा। इसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर हमारा इंडियन एम्बेसी का फंक्शन हो रहा था। हम निकल पड़े इस बिल्डिंग की रिसेप्शन की तरफ। रिसेप्शन में एंट्री कर कर हम निकल पड़े लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट से तीसरी मंजिल को पहुंचे। लेट तो हो चुका था, जब तक हम पहुंचे हमको सिर्फ भाषण सुनने को मिला। ध्वजारोहण कार्यक्रम हो चुका था। बसकर बहन अब कितना देखेगी। I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soulmate Nabi armed forces who martyr became a song of our faces. Countless Indians plunged themselves into the freedom struggle under the leadership of father of the nation, Mahatma Gandhi. Baba Saheb, Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of the social reform and patriotism. At the time of our independence, Sardar Patel put an end to the system of kingdoms and integrated the princely states into our independent democracy. I humbly bow to all those great sons and daughters of Bharat Mata who guided our country to its freedom and its progress there.
डांस और भाषण सुनने के बाद हमारा टाइम हो चुका था पेट पूजा का। आइए देखते हैं खाने में क्या क्या था। हाँ व्लॉग भाई, व्लॉग ಏನಾರ ಹೇಳ್ರಿ। ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನೀವೊಂದು ಕೈಯಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊರೋ ಕೈಯಾಗ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷೊಳಗ್ಬೇಕ ಹಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಜೇಬಿನ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీరు ఒకసారి. ఇస్తాను నాకు ಹಾಕೋ ಇದಿರೋ ನೀ ಹಾಕೋರು ನೀ ಹಾಕೋ ಅರೆ నాకు ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ಶನ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟೇ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ದರ್ಶನ್ ಅದೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು 80ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದಾಗಿ ನಾನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸೇಡಮಿಂದ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಗಗೆ. ಇವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನು, ನಮ್ಮ ಬಾಸು. ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಸಗಿದ್ದ ಬೆಳೀತಿದ್ದ. ಇವರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದೇನಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೆಂತಕ್ಕಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರವ ನಮ್ದು. ಈಗ ನಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕತ್ಲತ್ತಾರ. ಜರ ಬರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 guys who forcefully told me to do vlog. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾನ ಮೀಮ್ ನೀನು ದರ್ಶನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಲಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಬೇಡ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಚಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಊಟ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. और यहाँ तक देखने के लिए आपका सहे दिल से धन्यवाद। अगर आप एक और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो 1-2 कमेंट ठोकिए, लाइक भी 1-2 ठोक के। बाय बाय।